Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Baladeva, Jaya Krishna Balaram, 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 Jaya Krishna Balaram. Shri Harinam Sankirtan Yagi Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Balarama Purnima Ki Jai, Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for inviting me on this auspicious occasion of the appearance of Lord Balaram. ये बहुत मुझे इसका मुझे सौभाग्य मेरा कि मैंने आप मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आपने बलराम पूर्णिमा के उत्सव के ऊपर. Today I will read from just to begin the presentation. I will read a verse from Srimad Bhagavad Gita. भगवद गीता में शायद मैं एक श्लोक पढ़ूंगा उसका थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करने के पहले. Yeah, and this will be 4:9 from chapter 4, verse 9. तो ये चौथा अध्याय है भगवद गीता का श्लोक संख्या 9. This is a very important verse because Krishna promises something in that verse. तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें कृष्ण खुद कुछ हमें वचन दे रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं किसी चीज का. So this is the verse.
Janma karmya chame jidyam evam yoveti tatvatah tyaktva deham punah janma naiti mameti so arjuna. जन्म कर्म च मे दिव्यम देति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन. Translation: one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है. So there is quite a long purport by Srila Prabhupada. I will just read the first sentence and the last one. And for homework, you can all reread it tonight before you go to sleep. तो मैं इसमें जो है ना, क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है, तो स्टार्टिंग का जो है पहले आरंभ का मैंने जो पढ़ूंगा और अंत का मैं थोड़ा सा इसका तात्पर्य पढ़ूंगा. बाकी आप जो बीच वाला जितना भी पूरा तात्पर्य आप सोने के पहले आप बात. Srila Prabhupada ki jai. So, the Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. तो सातवें श्लोक पर लिखते हैं, 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है. जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है. भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है. Thank you, Prabhu. And one last sentence from the purport, from the end. Srila Prabhupada states here, he quotes a verse from the Shvetashvatara Upanishad, and the verse is Tameva vidittvati mrityumeti nanyaha panta videte yanaya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. Shvetashvatara Upanishad 3:8. यहाँ में श्रील प्रभुपाद ने श्वेताश्वर उपनिषद के 30वें अध्याय में से 8वें श्लोक बोला है और उसका फिर हमने उसका अर्थ भी दिया है. तो तमेव विद्यत्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय. श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है. इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है. So, dear devotees, again, thank you for inviting me. All glories to Srila Prabhupada, all glories to all the devotees, all glories to Srila Gurudev and Shri Krishna Balaram. तो बहुत समय आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने है ना सब भक्तों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है और श्रील प्रभुपाद और विजय और कृष्ण बलराम और जितने भी भक्त हैं शाम जैसे सबका मैं गान करता हूँ. With all your blessings, I will try to continue the presentation. तो मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं अभी उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है बलराम के पूर्णिमा के बारे में. आपको
So what we understood from the verse I read from Srimad Bhagavad Gita is very important. Krishna is telling us that if we understand his position as the Supreme Personality of Godhead, we will solve all our problems. We will go back to the spiritual world. तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण है ना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर हम उसके जन्म का कारण अगर हम जानते हैं और जन्म के बारे में अगर समझ लेते हैं कृष्ण के बारे में जन्म के बारे में तो उन्होंने बोला है कि आप आसानी से मेरे धाम में आप आ सकते हैं. However, we understand from Srimad Bhagavatam that not only Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but also Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. लेकिन जैसे हम जानते हैं भागवतम से कि सिर्फ कृष्ण ही परम भगवान नहीं है, इसके साथ साथ में बलराम जी वो भी परम भगवान. And this means that if we understand Lord Balaram's appearance and activities, we will also go back to the spiritual world. इसका मतलब है कि हम अगर हम बलराम जी का जो उसकी जो लीला है और उसका जो जन्म है उसके बारे में अगर समझ लेंगे तो हम जैसे कि कृष्ण के बारे में सुने वैसे बलराम को समझ लेंगे हम भगवत धाम जा सकते हैं. So who is Lord Balaram? एक्चुअली बलराम कौन है? So today we are celebrating Balaram Purnima, which is also known as Balaram Jayanti, the appearance of Baladev. तो आज हम पूर्णिमा जो बलराम पूर्णिमा उसका हम त्योहार मना रहे हैं और इसको हम बलराम जयंती भी नाम से कहा जाता है जिसमें कि बलराम का आविर्भाव दिवस है, उनका प्रकट दिवस है. So sometimes in India we hear how some great personalities, when they have birthday, it is stated it is Mahatma Gandhi's Jayanti or someone's Jayanti, but it's not the same as Balaram Jayanti. जैसे हम जैसे खासकर जो भारत में कई लोग जो कोई महापुरुष का है उसका भी जो जन्म होता है तो उसको जयंती बोलते हैं, महात्मा गांधी जयंती. लेकिन वो जो महात्मा गांधी जो उनका जो जयंती और ये बलराम जयंती दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक जैसा है. So the real Jayanti actually applies to Krishna Jayanti, Janmashtami, and Balaram Jayanti for the avatars of the Lord. तो सिर्फ जयंती का जो उपयोग जो शब्द का हम सिर्फ जो कृष्ण की आविर्भाव के दिन बलराम के जितने भी जो भगवान के अवतार हैं उनका जब प्रकट्य होता है तो उनमें ही सब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं. From Srimad Bhagavatam and from Sri Chaitanya Charitamrita, we understand that Nityananda Prabhu is actually Balaram, and that Balaram is the Sankarshan, from whom comes the Vishnu avatars. तो आप जैसे हम चैतन्य से समझ सकते हैं कि जैसे जो बलराम ही नित्यानंद है और वही संकर्षण उनका जो संकर्षण भी उनको ही कहते हैं और जिसमें से जो बाकी जो सब बाकी अवतार का उत्पत्ति होता है संकर्षण. So this is described in Chaitanya Charitamrita 5.7, Adi Lila, chapter 5, text 7. तो ये चीज जो है ना आदि लीला में जो 5वें अध्याय में आदि लीला के और 7वें श्लोक में बताया गया है. And it sounds like this: Sankarshana Karanato Yasai Garbo Dasai Chapayobdi Sai Sheshas Chaya Samsa Kalaha Sanitya Nandakyarama Sharanam Mamastu. Translation: May Sri Nityananda Rama be the object of my constant remembrance. Shankarshan, Sheshanak, and the Vishnus who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. तो यहाँ पे जो है ना जो बता रहे हैं यहाँ पे जैसे कि
जो इसका जो संकर्षण काण तोयशाई गर्भोदक्षाई च पयोब्दिशाई शेषांश यशांश कला च नित्यानंद राम शरणम ममस्तु। अनुवाद में बता रहे हैं, वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर गर्भ सागर तथा शीर सागर में शयन करते हैं। So the next verse, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami has written the following. Shri Balarama Gosani Mula Shankarshana Pancharupa Dhari Karena Krishnera Sevana, which means Lord Balaram is the original Shankarshan. He assumes 5 other forms to serve Lord Krishna. तो श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे कृष्ण सेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण है, वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। So we can see from Shastra that Balaram is actually Krishna, is one of the aspects of Krishna. We hear how Prabhupada uses the word is an expansion of Krishna. तो अभी शास्त्र से भी हमें जैसे यहाँ पे ज्ञात होता है, प्रभुपाद भी यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो उसका विस्तार है, उसका कृष्ण के स्वांश है वो जो बलराम जी है। Yeah. So once Srila Prabhupada was asked who is actually the Supreme Person, Krishna or Balaram, and Prabhupada said both. They both are the Supreme Person. तो इसलिए किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि कौन परम है, एक्चुअली भगवान है, तो कृष्ण है या बलराम परम भगवान है? तो प्रभुपाद ने बोला दोनों ही परम भगवान है। Yeah. However, Srila Prabhupada said that he said the only difference between both of them is the color. Balaram is white, and his mood is different from Krishna's mood. That's the only difference. सिर्फ इनमें जो सिर्फ एक ऐसा ही अंतर है, जैसे इनका शारीरिक है, कलर का है, मतलब रंग का है। एक का रंग जो है वो श्वेत वर्ण के हैं वो, और जो उनका जो भाव है वो भाव जो अलग है कृष्ण। So what is Balaram's bhav? तो बलराम जी का भाव क्या है? He is called Sevaka Bhagavan. तो बलराम जी क्या कहलाते हैं? सेवक भगवान कहलाते हैं। Yeah. Actually, he is a Seva Bhagavan, and Krishna is Sevaka Bhagavan. तो ये जो सेवक भगवान है कृष्ण सेव्य भगवान है, सेवा लेने वाले। Yeah. So the सेवा देने वाले। Yeah, the one is serving and the one is receiving the service. तो एक है ना सेवा दे रहा है और एक दूसरा जो सेवा ले रहा है। Yeah. So this is the only difference in the mood between Krishna and Balaram, the color and the mood between two of them. तो यही उसका जो अंतर है, एक तो उनका जो वर्ण है उनका श्वेत वर्ण है और सावले है, और दूसरा जो उनका भाव का है। So we also hear that Balaram is the expansion of Krishna. How do we understand this? तो जैसे अभी हमने बताया कि जो बलराम जी उनका जो विस्तार है, उनका स्वांश विस्तार है, तो हम कैसे इसको समझेंगे? Srila Prabhupada explains that they are both eternal. In other words, there was no time when Balaram didn't exist and suddenly he just appeared from Krishna. तो यहाँ पे बलराम जी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बलराम जी वो भी स्थायी है, वो ऐसा नहीं कि वो है ना पहले कृष्ण है बाद में बलराम और फिर अचानक से आ गए, ऐसा नहीं। दोनों का स्थायी अस्तित्व है, कृष्ण का भी बलराम का, दोनों एक साथ। So Balaram is eternal
And how then we understand him as an expansion of Krishna? तो बलराम जी जो स्थायी है पूरे, उनका स्थायी अस्तित्व है, और कैसे हम समझेंगे कि ये कृष्ण के विस्तार है? It seems that he doesn't expand at some particular point in time, but he exists eternally like that. So how is he an expansion? तो बोलते हैं कि जैसे जब हमको मालूम है कि वो स्थायी रूप से दोनों का स्थायी अस्तित्व है, तो फिर हम कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो उनके स्वांश है, कृष्ण के विस्तारित रूप है, स्वांश है? So Balaram is considered an expansion because he is simply Krishna in another form, another rupa of Krishna. क्यों? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो बलराम के कैसे विस्तार है कि जैसे वो उनके दूसरा एक, उनके शरीर का दूसरा एक उनका रूप है, बस ऐसा बोल. Yes. So just like Krishna exists eternally, Balaram also exists eternally. Yet he is in the mood of the servant of Krishna. तो जैसे कि जो स्थायी रूप से उनका अस्तित्व है, स्थायी अस्तित्व है कृष्ण का, वैसे बलराम का है सिर्फ भाव का है, तो ये सेवा का भाव है, हम कहते हैं सेवक का भाव है, बलराम की सेवा करना चाहते हैं. Yeah, Sevaka Bhagavan. And Lord Balaram, he serves Krishna in 5 different moods, 5 different services. तो यहाँ पे जो लेकिन जो 5 भाव में उसके जो अलग अलग उसका जो भाव, अलग अलग रस है उनका, जिसको बोल सकते हैं अलग 5 रसों में उनका सेवा करते हैं. He serves in Shantaras as Krishna's paraphernalia. तो पहला वो शांत रस में उनका सेवा करते हैं, जैसे उनकी जो साज सामग्री है, जो भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री लगती है, वो है उनका. For example, Sri Vrindavan Dham is an expansion of Balaram, or a representation of Balaram. जैसे वृंदावन धाम है, तो वृंदावन धाम वो भी उनका बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उनका ही विस्तारित रूप है वृंदावन, बलराम. And everything that is connected to Krishna's Leela is all representation of Balaram. तो जो लीला में जितने भी जो साज सामग्री है, जो कृष्ण से संबंधित साज सामग्री है, वो सब कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व, सॉरी बलराम का ही प्रतिनिधित्व करती है. Krishna's flute, Krishna's shoes, the mridanga, the kartals, this is all Balaram's representation. तो कृष्ण का जो मुरली है, जो करताल है, मृदंग है, जो भी उनके से जो संबंधित चीजें हैं उनके पास, वो सब बलराम. Yeah, this is the Shantaras. तो ये शांत रस कहलाता है. Then Balaram serves as a servant in Dasaras. तो फिर बलराम जी है ना दास्य रस में उनका भी सेवा करते हैं. Although he is the older brother, as a cowherd boy, he often serves Krishna as an assistant. तो जैसे जबकि बड़े भाई हैं उनके से, लेकिन फिर भी उनका वो हमेशा सेवा में लगे रहते कृष्ण की, जो सेवक से. Sometimes he massages Krishna's feet. कभी वो कृष्ण के पैरों को भी दबाते रहते हैं. And sometimes Balaram serves in Sakyaras, in friendship. कभी जो है ना कृष्ण जो है ना वो बलराम की साख्य रस में, मतलब मित्र के रूप में, दोस्त के रूप में. Yeah, they go to herd the cows together in the forest with Krishna. Yeah. तो जंगल में ना गायों को चराने जाते, दोनों साथ साथ में गायों को चराने जाते. And sometimes they have wrestling matches with Krishna, 2 of them. कभी वो कुश्ती लड़ते हैं बलराम जी. Sometimes he is joking with Krishna. कभी वो कृष्ण के साथ में चुटकुले बाजी करते हैं. When they were young boys, one time Balaram told Krishna, you are not the son of Nanda and Yashoda, because they have a white complexion, but you are not white complexioned.
you have black complexion, therefore they are not your mother and father. तो वो हमेशा मजाक करते रहते हैं जो कृष्णा से। तो एक दिन कृष्ण से मजाक पैदा कर उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण आप नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुम तो सांवले हो और जो बलराम सॉरी नंद और यशोदा वो तो बहुत ही श्वेत वर्ण के हैं वो, और आप सांवले वर्ण के हो। So then Krishna ran to Mother Yashoda crying. और फिर कृष्ण फिर रोते रोते यशोदा माई के पास जाते हैं। And he told her what Balaram had said. तब वो है ना उनको बोलते हैं जो बलराम ने कहा, उनको जाके बताते हैं यशोदा को। And that would increase the love between Krishna and Mother Yashoda. She will give him even more affection. इससे क्या होता है कि जो कृष्णा और माता यशोदा के बीच में प्यार और बढ़ता है इससे, इससे वो ज्यादा उनको प्यार करने लगती है। So Balaram was making these jokes simply to increase the affection between Krishna and Mother Yashoda. तो इसलिए ये जो भी जो उनके जो चुटकुलाबाजी करते थे, व्यंग्य करते थे, मजाक करते थे, तो मजाक का उनका यही होता था भाव कि ताकि यशोदा और कृष्ण का दोनों का प्यार बढ़े। One time Balaram told Mother Yashoda, Krishna is eating earth. तो एक दिन है ना वो बोलते हैं उसको कृष्ण को, और कृष्ण बलराम जी माता यशोदा को कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। And when Mother Yashoda opened his mouth, she saw the whole Brahmanda, the whole universe within his mouth. तो जब माता यशोदा ने बोला चलो मुंह खोलो मट्टी खाई है, तुम देखना चाहती हूँ, देखिए मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है उनके मुख में। It's something like the picture behind Radha Bhav Prabhu, if you're seeing it. तो आप देख सकते हैं कैसे दिखा था उनको, जैसे राधा बाबा प्रभु जी के पीछे जो आप देख सकते हैं चित्र है ना, वो चित्र वैसा ही वो उनके उसमें दिखता है। That's what Mother Yashoda saw in the mouth of Krishna. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। Jaya. And this is Balaram's jokes because it's his Sakya rasa with Krishna. तो ये जो है ना एक बलराम के साथ जो इनका जो ये जो मजाक करते हैं, ये एक्चुअली उनके जो साख्य रस को प्रदर्शित करता है। Sometimes he would be also in Vatsalya ras. Balaram would be in Vatsalya ras towards Krishna. तो कभी कभी जो बलराम जी है वो कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस भी दर्शाते हैं कभी कभी। As the older brother, he will teach Krishna, he will instruct Krishna as an older brother to take care of him. इसलिए कभी कभी वो जो कृष्ण उनको जैसे उनको सिखाते थे, फिर उनकी रक्षा करने के लिए उनका ध्यान रखते थे, वो जैसे माता पिता बच्चे का ध्यान। And sometimes he would even when some demons came, Balaram killed some of the demons as the older brother, protecting the cowherd boys, including Krishna. तो इसलिए कभी कभी जब राक्षस आते थे तो उनका है ना रक्षा करने के लिए उसके सखाओं की और कृष्ण की रक्षा करने के लिए उनको मारते हैं, बलराम राक्षसों का भी नाश करते हैं। So then Krishna, then Balaram has the seva of Madhurya Ras as well as the Manjari, who is serving actually Radha and Krishna. तो उनका जो फिर जो उनके एक मंजरी के रूप में उनकी जो माधुर्य रस उनकी भी सेवा करते हैं, मंजरी के रूप में राधा। Yeah, so he has that bhav as well to support the Madhurya Ras of Radha and Krishna. तो राधा और कृष्ण में जो माधुर्य रस को उसका भी बढ़ाने के लिए, माधुर्य रस का ज्यादा आनंद ले सकते हो, इसमें भी ये सहायता करते हैं। So Balaram then, as we hear from Sri Chaitanya Charitamrita, he expands into Sankarshan, and then later on that Sankarshan expands into Vishnu,
and Mahavishnu, Garbhodakasai Vishnu, Shirudakasai Vishnu, and he becomes responsible for maintaining the material world as well. तो इसलिए आप देख सकते हैं जैसे कि चतुर्चरिता में भी बताया गया कि संकर्षण के रूप में जैसे बलराम जी आते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, फिर उससे 3 विष्णु निकलते हैं, दक्षाई और गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, और फिर ऐसे करके वो ब्रह्मांड का पूरा कैसे जो पालन को करना है, ब्रह्मांड को कैसे उनको मेंटेन करना, पालन करना है उसका, वो बलराम जी के पास। So we see actually how this material world is so wonderfully managed. It is managed by Shri Balaram and his energies. तो आप देख सकते हैं भौतिक जगत कितना बढ़िया एकदम तरीके से पूर्ण रूप से बहुत अच्छे ढंग से इसका व्यवस्था की गई है, तो इसका तो प्रबंध किया जाता है पूरे भौतिक जगत का। तो ये जो बलराम के जो विस्तार है और उनकी जो शक्ति है वो ये सब करते हैं। This material world is complete and perfect for the usage of the jivas who live within this realm of birth and death. तो इसलिए जो ये भौतिक जगत है पूर्ण है एकदम, और जो कि उन सभी जीवों के लिए वो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे ताकि अच्छे ढंग से रह सके, सब उसको बनाते हैं बलराम जैसे उसको देख सकते हैं। So one atheist recently told me, how do you know there is God? तो एक नास्तिक ने मुझे अभी किसी ने पूछा मेरे से कि आप कैसे मानते हैं कि हाँ भगवान है, आप कैसे कह सकते हैं भगवान? He said to me, you just have faith that there is God. You've got no proof. मतलब जस्ट आपको तो एक श्रद्धा है बस, लेकिन आपके पास सबूत नहीं। And I told him, actually, you have faith that there is no God and you have no proof. तो मैंने उसको उत्तर दिया कि है ना, जैसे आपको फेथ है, आपकी श्रद्धा है, कि श्रद्धा है कि भगवान नहीं है, ये श्रद्धा है आपकी, लेकिन आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि भगवान नहीं है, इसका आप सबूत साबित करके बताओ भगवान नहीं है। क्या साबित है, सबूत आपके पास कि भगवान नहीं? Yeah, so I told him, actually, my faith in God is more logical than yours. तो उनको बोला कि मेरी जो श्रद्धा है कि भगवान है उसका अस्तित्व में, वो ज्यादा तर्क से भरा हुआ है बनस्पत की आपकी जो श्रद्धा है नास्तिकता। Because we can see how wonderfully managed is this world. क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ही बड़ी आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप, इतना अच्छे ढंग से ये पूरा जो भौतिक जगत को कैसे इसकी प्रबंध किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था कैसे की जा रही है। We know that if there is a management, there is a reoccurring events that are happening again and again. If there is management, these events are happening again and again. For example, if there is a business that is supplying some stock to a shop, every day the truck with the stock that supplies the shop is coming, and we don't see the manager of this business, but we know he's there. तो जैसे कि है ना, बस हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं इसको कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाती है, कैसे कोई मतलब इसको संभाल रहा है। जैसे कि कोई हम बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कोई भी चीज बनाते हैं तो वो बनते जा रही है, क्योंकि वो दुकान में देना है उसको, कई दुकान में उसको देना है उसको बेचने के लिए, तो वो व्यापार में जो भी चीजें बनाई जा रही है उसका लगातार बनते जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि वो चीजें बन रही है और दुकानों में पहुंच रही है, तो इसके पीछे कोई मैनेजर है, इसका कोई प्रबंधक है। जो प्रबंधक है वैसे ही जो भौतिक जगत में भी कुछ चीजें हो रही है दिन प्रतिदिन दिनचर्या में, तो उसके प्रति भी कोई प्रबंधक है, कोई मैनेजर है। And in the same way, we can look at the sun and we see how this amazing object, the sun, comes every day and goes away every night, and then it comes again and then it goes, and this is for thousands and thousands of years. तो आप इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जो सूर्य है वो डेली आता है, इतना बढ़िया बढ़िया चीज है, डेली सुबह सुबह आता है, फिर शाम को संध्या में के पहले ही चला जाता है, फिर सवेरे आता है। तो आप देख सकते हैं कई हजारों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है सूर्योदय की और सूर्यास्त की।
And this is the proof that someone is managing. तो ये इसका सबूत है कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई प्रबंध कर रहा है, इस चीज का प्रबंधक है कोई इसके पीछे. Yeah. So we have more logic than the atheists. इसलिए हमारे पास में ज्यादा तर्क शक्ति है नास्तिकों की तुलना में. Another example is if we take a ball, a soccer ball, and if we spin that soccer ball, to spin like that, and if we put our finger on top of the ball, it will stay in orbit. It will be spinning in the same place. And if we lift our finger, it will go away immediately. तो इसके जैसे हम कि कोई भी बाल को अगर हम उसको बाल आप देखेंगे उसमें अगर गीला करके रखें और उसको हम उसको घुमाएं तो वो और उसके ऊपर हम उंगली रख दें और घूमते जाएगी वो, और लेकिन जैसे हम उंगली अगर हटा दें तो वो किधर भी चली जाएगी, वो गेंद किधर भी चली जाएगी. So it is the same with the sun. The sun comes without moving closer or further away. It stays in the same place every day, which means someone is managing that sun to be going in to be having that same path year after year. तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो सूर्य एक विशेष उसकी कक्षा है, वो विशेष कक्षा में घूमता रहता है वो. तो इसका मतलब ये है कि कोई न कोई प्रबंधक है जो उसको इस एक ही विशेष कक्षा में हमेशा घूमते रहना, वो उसका प्रबंध कर रहा है. मतलब कोई प्रबंधक है जो उसको उसी विशेष कक्षा में घुमाता रहता है. And that person behind everything is actually Balaram, Shankar Sham. तो ये सब जो चीजों का प्रबंध करता है, जो सृष्टि चल रही है, वो सृष्टि का प्रबंध कौन है? वो बलराम है. He provides the whole Mahat Tattva, the whole energy for the creation of this material world. ये जो महत्त्व की जो हमें जो आवश्यकता होती है पूरा भौतिक जगत के निर्माण करने की रचना करने के लिए, वो सब बलराम जी देते हैं. He provides what we call pradhan. तो हम जो प्रधान है वो भी हमें उसका भी देता है. Yeah. So the word pradhan, if we think a little bit about it, it means the ancient gift, because pra means something very old. Pra, it's like pitamaha and prapitamaha, right? Pra. And dan means to give. Pradhan, it means very ancient gift from the Lord is this energy. उसके जो भी आप देखते हैं यहाँ पे भगवान की शक्ति जिसको प्रधान कहते हैं, तो प्रधान का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो पूर्वजों ने जो दिया, हमारे पितामह पर पितामह, तो उनकी तरफ से जो हमें उपहार दिया गया है वही उपहार है. ये जो शक्ति है ये भी भगवान की शक्ति जो उपहार के रूप में हमारे पास है. So Shri Balaram is serving in the spiritual world with Krishna, as well in serving as the management of the material world. जैसे जो बलराम है वो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की भी सेवा करते हैं, इसके साथ साथ वो भौतिक जगत का जो व्यवस्था है उसका प्रबंध है, उनके प्रबंधक भी. And sometimes Balaram serves as a Lila avatar as well. तो कभी-कभी जो बलराम जी लीला अवतार के रूप में भी आते हैं सेवा करते हैं. So he comes to this material world with Krishna. तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में कृष्ण के साथ में भौतिक जगत में आते हैं. When Krishna and Balaram appear in this world, they don't vacate the spiritual world like we, the jivas, vacate a place. They just expand themselves into this material world. इसलिए जब जैसे कृष्ण और बलराम भी आते हैं तो एक्चुअली वो जैसे हम लोग अभी जैसे कई जगह से हम निकल गए तो वो खाली स्थान हो जाएगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता. वो वहां पे भी रहते हैं और यहाँ पे भी जो भौतिक जगत में आते हैं, दोनों जगह उनकी उपस्थिति रहती है, वो जगह खाली नहीं होती है. तो आध्यात्मिक जगह. So their eternal lila, their nitya lila in the spiritual world, they bring it down to show us what they are doing in the spiritual world. That's why they come here. इसलिए जो उनकी जो वहाँ पे जो स्थायी रूप से जो लीला वहाँ पे चल रही है,
है ना। तो वही लीला हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कौन सी लीला है हमारी, वही चीज है यहाँ पे हमको बताने के लिए। तो इस भौतिक जगत में वो लीला आके करते हैं, सेम जैसी वहाँ लीला हो रही है यहाँ पे तो बताने के लिए हम करते हैं। Their appearance is extraordinary, is not normal like our appearance in this world. तो उनका जो प्रकट्य है वो है ना बहुत ही असाधारण होता है। वो हमारे जैसे जो जो बद्ध जैसा नहीं है कि हमारा जो प्रकट्य हमारा जो जन्म होता है उसके जैसा नहीं, उसका अलग है। Their appearance is transcendental. तो उनका जो है ना जो प्रकट्य है वो दिव्य होता है। That's why Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha. If you understand my appearance and activities in truth, you will not take birth, but you will come to me, O Arjuna. जैसे यहाँ पे भगवद गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म में जो कर्म है और मेरी जो गतिविधि है, मेरी लीला है, उसको जो समझ लिया फिर वो कभी फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, वो स्थायी रूप से मेरे साथ आते जगत में। So when Krishna and Balaram come to this world, they come in different rupas. जैसे जब कृष्ण और बलराम इस जगत में आते हैं तो वो है ना अलग अलग रूपों में आते हैं। In Brahma Samhita, Lord Chaitanya, he found Brahma Samhita on his South Indian tour. And there he found this verse, Advaitam Achutam Anadyaranam Torupam. Adyapanam Navayovanam Cham. Tedeshu Durlabam, Adurlabam Atma Bhakto Govindam Haripurusham Tamaham Bhajami. Which means that the Lord has, the Lord is infallible, he is one, Advaitam, Achutam is infallible, and he's got many forms. जैसे ब्रह्म सविता अविद्यतम अच्युतम अनादि अनंत परमेश्वर करके आता है तो उसमें भी जो जो भगवान यहाँ पे जो कैसे मतलब अद्वैत मतलब एक ही है, वो अच्युतम मतलब कभी गिरते नहीं है वो, और कई उनके उनके रूप कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं, ये बता रहे ब्रह्म सविता। Yeah. So when they come here, sometimes they come as Ramachandra and Lakshman. These are Krishna and Balaram. जैसे कभी कभी जब वो आते हैं भौतिक जगत में रामचंद्र लक्ष्मण, तो मतलब वही है कृष्ण बलराम। In some yuga, they come directly as Krishna and Balaram. तो कभी कभी किसी युग में वो डायरेक्ट सीधा सीधा कृष्ण बलराम के रूप में। Yeah, that is once in a day of Brahma. वो ब्रह्मा जी के कोई एक दिन में आते हैं। And also, after they appear as Krishna and Balaram, in the beginning of Kali Yuga, they appear as Lord Chaitanya and Lord Nityananda. ऐसे करके जब भी वो जब कृष्ण बलराम के रूप में आते हैं तो कलयुग में, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में। So Lord Balaram comes as Lakshman in Treta Yuga, and then in Dvapara Yuga he appears as himself, Balaram, and then he appears in Kali Yuga as Nityananda Prabhu. उसके जो बलराम जी वो जो त्रेता युग में है वो लक्ष्मण के रूप में आते हैं, फिर द्वापर में बलराम के रूप में फिर बलराम आते हैं वो, और फिर जो कलयुग में नित्यानंद के। So then they perform these leelas that are also in the spiritual world, but they are eternally performed there in the spiritual world, and they bring those leelas to make them visible and available to the jivas in this world. इसलिए जो भी लीला करते हैं वो है ना यहाँ पे आके करते हैं, ताकि भौतिक जगत में जो वहाँ पे जो हो रही है वो सब लोगों को दिखाने के, उनको बताने के, श्रद्धा को ज्यादा बढ़ाने। Because when God himself comes to this world and performs his leelas, he gives us an opportunity to become attracted to him. तो क्यों ऐसा करते हैं अपनी लीलाओं के यहाँ पे पृथ्वीलोक में, ताकि हम सब उसकी जो तरफ आकर्षित हों और हमारी इच्छा हो कि उसके पास जाए। Otherwise, we may be talking just God exists, like I said earlier on, because the sun is there every day. We know someone is managing, we can just speculate like this. But Krishna is merciful. He comes down so we can see him.
तो इसलिए जैसे हम लोग ऐसे नहीं तो हम लोग अगर कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, हाँ जस्ट सब से बोलते रहे, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा सही में ऐसा होता है क्या। लेकिन उसकी वो सब हमको उसका साबित करने के लिए कि यस मैं हूँ और मेरी अपनी लीलाएं आके दिखाते हैं और उसके साथ साथ अपनी कृपा के द्वारा हमें आकर्षित करते हैं सब, हमारा उद्धार करते That's why his Janma is actually Jayanti, is transcendental, and his karma as well is transcendental. हैं। इसलिए उनका जो जन्म है ना, वो भी दिव्य है और कर्म है वो भी दिव्य है। Yeah, they're divine. So by we hearing the leelas of the Lord, we become attracted to the Lord, and we develop sambandha. तो इसलिए भगवान की जब लीलाओं को सुनते हैं तो हम उनकी लीलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर हम हमारा जो संबंध स्थापित होता है। And when we have a connection with Krishna, with God Himself, and Balaram, of course, we begin to serve them. Abhidya. तो इसलिए जब हम इन दोनों के बारे में संबंध हम जानने लगते हैं तो फिर हम इसकी सेवा करना आरंभ करते हैं, जिसको बोलते हैं अभिदेय बोलते हैं। And then through the seva, through the service, we reach the platform of prayojan, which is Krishna Prema. तो इसलिए जब हम ये सब जो सेवा करते 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 फिर हम लोग है ना, फिर धीरे धीरे करके हम उस स्तर पर पहुंचते हैं प्रयोजन। प्रयोजन मतलब हम उनका जो हमें प्राप्त हो जाती है, प्राप्त लक्ष्य, वो लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। So whenever the knowledge about Krishna and the Vedas, the Vedic knowledge is lost, Krishna sends an avatar. इसलिए जब हमें जो वैदिक ज्ञान का जब लुप्त हो जाता है, ओके, इस संसार से, तो फिर है ना कृष्ण फिर अपने अवतारों को भेजते हैं। And the most recent avatar was Srila Prabhupada. इसलिए जो बहुत ही अभी अभी जो हुआ है अवतार, वो है श्रील प्रभुपाद, वो भी अवतार ही। And he was a Shakti-avesh avatar. और वो सत्य शिष्ट अवतार थे। And also he is a very intimate friend of Krishna and Balaram. और वो कृष्ण बलराम का बहुत ही करीब का मित्र है। We can guess this because one time the devotees asked Prabhupada, who are you in the spiritual world? तो इसमें कभी कभी भक्त लोग पूछते थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप आध्यात्मिक जगत में आपकी क्या क्या अवस्था है, वहाँ पे क्या स्थिति है आपकी आध्यात्मिक, आप क्या है वहाँ। And Prabhupada simply said, if I tell you, you will faint. तो श्रील प्रभुपाद ने बोला अगर आपको बताऊंगा आप बेहोश हो जाओगे। So he didn't reveal his position, but we know he is a very dear friend to Krishna and Balaram. तो वो हम अपनी जो अवस्था हमको बताएंगे क्या उनकी वहाँ पे अवस्था है, तो क्या स्थिति है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन हमें मालूम है कि वो कृष्ण बलराम के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। One time Srila Prabhupada went to Atlanta in the United States, and the devotees were having the installation of Gaur Nitai deities. एक बार श्रील प्रभुपाद अटलांटा में वहाँ पे गए और अटलांटा में वहाँ पे जो कुछ भक्त लोग है ना, गौर निताई का जो अर्थ वगैरह उनका स्थापना करने का। So he sat on the Vyasa-san to give lecture. और वहाँ पे जब व्यासासन में प्रवचन देने के लिए बैठे तो And after he chanted the prayers and Jaya Radha Madhava, after he sang Jaya Radha Madhava, और उसके बाद जब उन्होंने राजा राधा माधव जो भी उनकी जो प्रार्थना है वो सब उन्होंने पूर्ण कर ली, बोल दी, he was just about to start to talk. वो जैसे उन्होंने आरंभ किया बात करना, And he burst into tears and he couldn't speak. और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फिर उसके बाद कुछ बात ही नहीं करता। And the only thing he could say was, how kind a Gaur Nitai, they have come here. तो बस इतना ही उन्होंने बताया कि गौर निताई कितने दयालु हैं जो हमारे पास यहाँ पे आए अपने कृपा से। So this was Prabhupada's intense love for Gaur Nitai. He couldn't control himself on this occasion. इसलिए जो है ना गौर निताई की उनका विशेष
ऐसे भी प्रेम था गोपाल का बहुत ज्यादा उनका आसक्ति से वो अपना नियंत्रण खो बैठे उनका दर्शन करने मात्र। So without these avatars of the Lord, without the Vedic scriptures like Srimad Bhagavatam, like Bhagavad Gita, like the Upanishads, the living entities in this world are completely lost. तो लेकिन जैसे कि बाकी जो जैसे आते हैं तो वैसे जो जितने भी जीव हैं उन्होंने पूरा सब खो दिया है, सब चीज लुप्त सा हो गया है सब चीज। Most of the scriptural writings outside of the direct Veda, it is very simplistic and there is no clarity about the exact nature of God, how he looks, what he does. It's just some basic knowledge about God. तो इसलिए जो भी है इसलिए भगवान कैसे दिखता है, क्या है, कैसे है, वो सब गुम हो चुका है, जैसे कि लुप्त हो गया है वो। तो इसलिए कुछ मालूम नहीं पड़ता है लोगों को इसलिए कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। They're also helping people to develop God consciousness, but the Vedic knowledge is the mother of all godly literature. तो हम लोग जो देखेंगे वैदिक ज्ञान है, जितने भी जो आप साहित्य दिखते हैं, जितने रचनाएं दिखते हैं, उनका एक विस्तार है। And Krishna and Balaram, they always organize that this knowledge is being delivered to the living entities within this material world. जैसे कृष्ण बलराम हमेशा ये उनका ऐसा ढंग से उसका प्रबंध करते हैं कि ये जो ज्ञान है वो सब जीवों तक पहुंचे। That's why they come, and that's why they send great acharyas to teach us. तो इसलिए वो भी आते हैं और फिर कई महान आचार्य हमको भेजते हैं ताकि वो हम उनसे शिक्षा ग्रहण करें। So Lord Balaram, when they were small boys with Krishna, they were always playing with the cowherd boys and the cows. तो इसलिए जो हमेशा जो आप देखेंगे कि जो कृष्ण और बलराम वो हमेशा जो जैसे भी ग्वाल हैं, गोप हैं, उनके साथ में हमेशा गाय चराते रहते हैं, उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। They were sometimes very naughty. They stole butter. कभी कभी बहुत ज्यादा शरारती हो जाते थे और वो है ना मक्खन की चोरी करते थे। They will catch the tails of the little cows, and the little calves will run around, and they will be doing like sliding in the mud. तो इसलिए क्या है ना कभी कभी क्या है ना छोटे बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ा भागता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और फिर है ना कीचड़ में घुस जाते हैं। They were so naughty. बहुत ज्यादा शरारती थे। Yeah, but as they grew up, they actually had to become more serious to protect Dharma. तो लेकिन वो जो है ना जैसे ही वो बड़े होते हैं उस टाइम में वो बताते हैं कि कैसे हम धर्म की रक्षा करना। So Krishna and Balaram, they were always the protectors of Dharma. जैसे कृष्ण बलराम हमेशा ना धर्म की रक्षा के लिए होते थे। At age of 11, Kamsa called them to Mathura. जब 11 वर्ष के हुए तब है ना कंस ने उनको मथुरा में बुलाया। And he wanted to destroy them. And because he was feeling that Krishna and Balaram are dangerous for his desire to control the whole kingdom. तो इसलिए क्या है वो हमेशा कृष्ण बलराम को हमेशा एक्चुअली मारना चाहते थे। उसको डर लगता था कि जैसे उनका जो राज्य है उनका जो वो कभी भी छीन लेंगे और उसके ऊपर अधिकार देता है। Kamsa was very cruel. He put his own father in jail, Ugrasen Maharaj. जो कंस पे बहुत ज्यादा निर्दयी था, उन्होंने अपने पिताजी को उग्रसेन को अपने जेल में डाल दिया। So that Kamsa himself can take up the throne. तो ताकि वो है ना खुद उस राजगद्दी पे बैठ जाए। So Krishna and Balaram went to the wrestling match that was arranged by Kamsa, and they were challenged by Chanura and Mustika. तो इसलिए जब उन्होंने जो है ना एक बहुत ज्यादा एक जो व्यायाम कला में जैसे वहां पे उन्होंने
कुश्ती का एक जो है ना उन्होंने खेल रचा वहां पे, है ना, ताकि वो है ना उसमें कुश्ती में लड़के हैं उनका वध किया जा सके कृष्ण बलराम का। And they actually fought with Chanura and Mustika तो चानूरा और मुस्तिका से फिर उनका लड़ाई होती है and killed them और उन दोनों को उन्होंने मार दिया because Chanura and Mustika wanted to kill Krishna and Balaram. So the boys were stronger, of course. They were the supreme personality of Godhead. And Chanura and Mustika was just two demonic, simple jivas. तो यहाँ देख सकते हैं जबकि वो छोटे बच्चे थे उस टाइम, ज्यादा उनके मन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चानूर और मुस्तिका, क्योंकि उनका देखते प्रवृत्ति था, देखते थे उसके कारण उनको विजय पा सके, उनको मार सके। They actually got liberated. Chanura and Mustika got liberated. लेकिन चानूर और मुस्तिका को तो मोक्ष मिल गया उनको by the touch of the hands of the Lord. तो जो उनके जो भगवान के जो हाथ से स्पर्श करने मात्र से उनका, And then Kamsa was also killed. तो कंस है वो भी एक्चुअली मारा गया। And then Jarasandha was very angry. एंड कंस को जब ये देखा उसने तो बहुत गुस्सा आया था। Jarasandha was a relative of Kamsa and he wanted to destroy Krishna and Balaram and Mathura, the entire Mathura. तो जब ये उसको मालूम पड़ता जरासंध को, तो जरासंध का क्योंकि ये दामाद था कंस, तो इसलिए वो कंस की मृत्यु के बाद में पूरे मथुरा को कृष्ण बलराम सबका नाश करना। So Krishna himself defeated Jarasandha 17 times. But the 18 times Jarasandha attacked with Kalayavana from both sides. तो 17 बार एक्चुअली कृष्ण के ऊपर मथुरा के आक्रमण किया और 17 बार कृष्ण ने जरासंध मारा है, लेकिन 18वीं बार वो कालयवन के साथ दोनों तरफ से आक्रमण किया। And then Krishna had to move the whole dynasty, British dynasty, into Dwarka. तो पूरा फिर अपना जो जिसका कुल था, पूरा उनका वंश था, पूरा वंश का उन्होंने द्वारका में उसको स्थानांतरित किया। And that was again part of the Leela of the Lord, because this was service in a mood of separation. तो क्योंकि ये भी एक लीला थी, लेकिन ये जो है ना जो सेवा है वो एक्चुअली विरह भाव की सेवा है, विरह भाव की। Yeah, this is Viraha Bhav in relation to Vrindavan and the Vrajavasis. तो ये जो विरह भाव है वो किसके में है, वो ब्रजवासी वृंदावन के परोक्ष। So when they went to Dwarka, at some point Balaram became very much despondent, and he wanted to go to Vrindavan. So he went to Vrindavan at some point. तो लेकिन जैसे वो द्वारका की तरफ जा रहे थे, लेकिन बलराम को लगा नहीं मुझे तो वापस वृंदावन ही जाना, तो वृंदावन की तरफ रवाना हुए। And he spent time there with Nanda Yashoda, with the cowherd boys, with the gopis, with the cows and the calves. And then later he returned again to Dwarka. फिर इस तरह से उन्होंने आए, फिर वो नंद यशोदा और जितने भी जो वहाँ पे ग्वाल वाले थे सब उनके साथ में सब उन्होंने लीलाएं की, उसके बाद में फिर वो वापस। And then when he returned to Dwarka, he understood that there is a problem there, because Krishna's son Samba had stolen Duryodhana's daughter, who was meant to be married to Shishupal. तो लेकिन यहाँ पे जब वो आए थे तो उनको मालूम पड़ा कि अरे यहाँ पे तो एक्चुअली जो सांब है, और सांब ने एक्चुअली जो दुर्योधन की जो लड़की थी उसको ही उन्होंने उठा लिया, उन्होंने स्थापन किया, जबकि वो जो लक्ष्मणा थी वो लक्ष्मण की शादी किससे करना चाहता दुर्योधन, शिशुपाल से शादी करना। सांब ने उठा लिया, सांब ने जबरदस्ती। So Balaram became disturbed, and he wanted to interfere on the side of Duryodhana.
because obviously Samba had broken Dharma, the Dharmic law. I'll just switch the light on while you're translating. तो जो देखा जाए तो जो बलराम है वो क्योंकि सांब ने अधर्म का काम किया था, मतलब उसने जबरदस्ती उठा के लेके गया उसको, वो जो सांब है ना लक्ष्मणा को उसकी इच्छा के विरुद्ध लेके गया, इसलिए क्योंकि अधर्म का काम किया, इसलिए उन्होंने जो बलराम इसको है ना सपोर्ट में आ गया, बलराम उसको मतलब ज्यादा साथ दे रहे थे, दुर्योधन को उसका पक्ष लेने लगे. This is the proof that there is God. While I was talking, the sun is disappeared. इससे मालूम पड़ता है कि भगवान का अस्तित्व है. तो जब मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था तो सूर्यास्त हो गया. So when Krishna told Balaram, don't worry, it's okay, you don't have to take this further, then Balaram immediately agreed with Krishna. तो जब बलराम को उसने कृष्ण ने बोला कि इसको ज्यादा गंभीरता से मत लो, जो भी हुआ ठीक है ना, तो फिर this shows them, this is the exact mood of Adi Guru. तो ये जो है ना, ये आदि गुरु का भाव होता है. ये Guru is one who agrees with God, with Krishna. तो गुरु वही होता है जो कृष्ण के हर चीज से सहमत होता है. Krishna is beyond all the perceptions of the conditioned living entities, and his desires and his perspectives are the ultimate truth. तो इसकी जो कृष्ण जितने भी जो चीजों सबसे ऊपर है, तो उनकी जो डिजायर है वो सब जो जितनी भी है वो वही परम सत्य है. So when there was the Kurukshetra war, Balaram actually didn't want to take part in the Kurukshetra. इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उस टाइम में जो बलराम जी है वो उसमें हिस्सा नहीं लेना था. And Balaram decided to go on pilgrimage. और बलराम ने लिया कि मैं तीर्थ स्थलों की यात्रा करूँ. It was also the plan of Krishna. It was arranged like that. तो ये भी कृष्णा का ही एक्चुअली जो व्यवस्था थी, कृष्णा ही चाहते थे जैसा हो. So while he was on pilgrimage, he went to Naimisharanya. तो जब वो वहां पे तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे, उसके उस समय नैमिषारण्य में भी गए थे. And then we hear about the famous pastime of how he chastised Romaharshana. इसलिए आपको बहुत ही जो प्रसिद्ध एक उनकी लीला है कि कैसे वो उनको रोमहर्षण को उन्होंने कैसे उनका दंड दिया. When Balaram went into the assembly of sages, Romaharshana was sitting on the Vyasasana. इसलिए जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि जो रोमहर्षण है वहां पे जो व्यासासन पे बैठे हुए थे, नीचे ऋषि बैठे हुए थे. And all the sages rose and they wanted to greet Balaramji. जैसे वहाँ बलराम उपस्थित होते हैं तो जितने भी जो वहाँ ऋषि मुनि थे वो बहुत उनको मतलब गुणगान करना चाहते हैं, उनको महिमा गान करना चाहते हैं बलराम. But Romaharshan didn't get up. He stood sitting on the asana, on the Vyasasana. लेकिन वो रोमहर्षण वहां से उठा नहीं है, फिर भी बलराम के आने के बाद भी और व्यासासन पे बैठे ही रहे. So Lord Balaram understood that he was proud. तो बलराम जो वो समझ में आ गया, ये तो अहंकार में आ गया ये व्यक्ति. And what he did, he went and with a small blade of grass, he touched him and he actually killed him. और बलराम ने क्या किया, जब मालूम पड़ा उनको कि अहंकार में, उसने जस्ट एक घास का तिनका लिया और उसको स्पर्श करने मात्र से उसकी मृत्यु हो गई. So this is very interesting because Balaram touched Romaharshana with blade of grass. Blade of grass is the symbol of humility.
and he killed him with the symbol of humility, blade of grass. तो क्योंकि Because आपको मालूम घास का जो भूमिका है वो नम्रता को दर्शाता था, क्योंकि वो बलराम चाहते कि नम्रता के द्वारा ही आप मतलब किसी को भी हरा, yeah, because he was proud. क्योंकि वो बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए वो उनको नम्र बनाना चाहता था, अहंकार छूना। And the sages then they said to Balaram, you transgress dharma, you killed a Brahman and you have to atone. तो इसलिए उन्होंने बोला कि अरे आपने ये क्या किया, आपने देखिए ब्राह्मण की हत्या कर दी, ये आपका सब पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना चाहिए। So Lord Balaram was very humble and he said, okay, how do I atone? What should I do? Should I bring him back to life or you want me to do something else? And they said to him, no, don't bring him back to life. Just choose another person to take over the teaching place, and you go to all the different pilgrimage sites to atone. इसके जो ऋषि मुनियों ने उसको बताया कि आप अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाइए और वहां पे आपका धीरे धीरे आपका प्रायश्चित। So that's how he chose Ugra Shrava, which was the Ramaharshana Sutta, the son of Ramaharshana, to take over and to become the speaker of the Srimad Bhagavatam. इसके जो रामाचरण के जो पुत्र थे ना, उनको विश्व को उनको उन्होंने जो बताया व्यापक करके ताकि इसके द्वारा से श्रवण कर सकें। So Lord Balaram then went to different places of pilgrimage, and when he returned, he got to know that the Kurukshetra war was over and dynasties were also destroyed, the Yadu dynasty and the Kuru dynasty. उससे जब वो वहां पे आते हैं, जब वहां पे तो मालूम पड़ता है उनको कि जो बहुत भयंकर विध्वंस में 6 लोग मारे गए हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग बाकी बच्चे हैं, ऐसा करके उनको बहुत बुरा समाचार। He was also affected when he understood that Bhima had hit Duryodhana below the belt with the club, because that wasn't part of the rules of Dharma. तो इसलिए जो बोलते हैं कि जैसे उनको मालूम पड़ा, बलराम जी तो उस समय काफी वो विचलित हो गए थे कि भीम ने है ना उसको गजा को जो नीचे उसके जंघाओं पे जो मारा है, जो कि नियम का विरुद्ध था। But then Krishna told him, no, don't worry. This is I am okay with that. Then Balaram immediately took the side of Krishna also. तो फिर लेकिन जब उनको लगा कि मैं इसमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, आप कुछ मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता था, मेरी इच्छा थी कि आप कुछ। So this is the position of Adi Guru, the original Guru. He always supports the highest truth, which is Krishna himself. इसलिए ये जो आदि गुरु का जो उत्तरदायित्व था कि जितना जो कृष्ण के द्वारा जो स्थापित किया गया है सत्य, उस परम सत्य की स्थापना करें। I forgot also to mention that when they left Mathura and Jarasandha followed them, and Krishna and Balaram went up one mountain, and it was something very high, like 88 miles or something like that. This mountain is very high, and Jarasandha couldn't find them anywhere, but he wanted to make sure that they're dead, because he thought they probably died on this mountain. So he set the whole mountain on fire to burn Krishna and Balaram alive, just in case they're still alive. इसलिए जब वो मथुरा से जब चले गए थे वहां से मथुरा से, तो उनको मालूम पड़ा था जरूरत से कि वो किसी मथुरा से जाने के बाद किसी पर्वत के ऊपर गए। हाँ, पर्वत के ऊपर, तो उन्होंने तो तुरंत इसको कहीं वो भाग नहीं जाए वहां से, क्योंकि वो पर्वत के नीचे पूरी आग लगा दी ताकि
And Krishna and Balaram, they jumped from this mountain 88 miles, which is like 150 kilometers high. Himalayas is only 8 miles. तो आप सोच सकते हैं कि 8 kilometers, sorry, 8 kilometers. हिमालय से भी 8 किलोमीटर है, उससे कई गुना ज्यादा जो ऊंचाई का 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वहां से कूदे, हिमालय से कई गुना ज्यादा ऊंचा वहां से. Yeah. So they Jarasandha couldn't do, of course, anything. तो इसलिए जरासंध कुछ कर नहीं पाया फिर. Yeah, and Balaram also, there was one pastime which I forgot. He killed Rukmi, the brother of Rukmini, while they were playing a dice. तो वो रुक्मणी का है ना, उसका भी उन्हें वध किया था ना बलराम ने, क्योंकि जब वो खेल रहे थे अपना जुआ खेल रहे थे. Actually playing chess. They were playing chess. और देखा जाए तो वो शतरंज खेल रहे थे. Yeah, and this was after Krishna kidnapped Rukmini, and Rukmini became very angry. So he wanted to he wanted to do something, but of course he didn't have the power to do anything. So he decided, I'm just going to humiliate Balaram by playing chess and beating him on chess, to show him that he's strong in power, but he's not strong intellectually. इसलिए वो क्या रुक्मी क्या चाहता था कि है ना, वो बलराम का तो हम कैसे भी उसको है ना, हम नीचा दिखाना चाहता था, इसके लिए वो उसको शतरंज में हरा के उसको नीचा दिखाता. So they played few games. Balaram lost few games, but then he won some 100,000 gold coins twice. And Rukmi told him, no, I'm not gonna give you. You are lying to me. इसलिए जब उनको मालूम पड़ा कि जो है ना ये इतनी जो स्वर्ण मुद्रा है ना, इसका इतना उन्होंने जब उसमें जुआ में उन्होंने सॉरी शतरंज में दांव पे लगाना चालू किया, तो तब है ना जो बलराम ने कुछ हद तक कुछ टाइम तो हारे भी नहीं, कुछ टाइम जीते भी. तो जीतने के बाद में जब उन्होंने बोला मेरा जीत हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप नहीं जीते, आप हार गए, सब बोला. So Rukmi was very arrogant, and then insulted Balaram in different ways. So then Balaram basically hit him with the club and finished him on the spot. तो इसलिए जब रुक्मिणी मुझसे बहुत ज्यादा बहसबाजी करने लगे और बोले मैं नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, तो इसके लिए सर बहुत बलराम को गुस्सा आया और उन्होंने सीधा अपने एक ही जो गदा का एक ही वार से वहीं पे धराशय कर दिया उनको वहीं. Also, while they were playing this game, the king of Kalinga was laughing sometimes at Balaram. If Balaram was losing, he was laughing and joking with Balaram. So Balaram took his club and smashed his teeth. इसलिए जब हार रहा था, जबकि वो हार रहा था एक्चुअली, तो लेकिन उसको थोड़ा कभी वो हार रहा था बलराम, इसलिए वो जो से हंसता था, इसलिए उनको गुस्सा आया और बलराम ने गदा से उसको दांतों को तोड़ दिया. Yeah. So these are some of the leelas of Lord Balaram, and we can see this pastime of him killing Rama Harshana is very important, because he wanted to emphasize that humility before the Lord is the most important quality. तो अब हम देख सकते हैं लीला में कि कैसे उन्होंने है ना जो उनका मतलब नाश किया, और उन्होंने बताना चाहता पूरी संसार को कि नम्रता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. Yeah, and one few other things, and I'll conclude, is that someone asked me, is there any teachings given by Lord Balaram otherwise than that? Do we have any information about it? तो इसलिए किसी ने पूछा था कि क्या बलराम क्या और भी कुछ है उसका, तो इसके बारे में कुछ आप चर्चा करेंगे तो कुछ. Lord Balaram was, while he was on pilgrimage,
he would instruct many sages in different forests, many sannyasis he will see, and he will instruct them about the Vedic conclusions. And also he would instruct all the residents of the Kuru dynasty while he was present amongst them. इससे जो कुरु जो वंश का कभी भी उनको भी वो सही सही उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा जब तक वो वहां पे था उनको सही सही निर्देशन देता था. Yeah. So of course Lord Balaram taught also the Vedic conclusions, Sanatana Dharma, to whoever he saw, and also through his behavior. तो उन्होंने जिसको भी देखा उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहार के द्वारा सुना वेदों की और उसकी जो उसकी जितना जिनका ज्ञान दिया उनको जो भी वहां पे. So he was a Kshatriya, and sometimes he was violent, but he was also very soft and very gentle personality. तो वो क्षत्रिय था ना, कभी कभी इसलिए वो बहुत हिंसक हो जाता था, लेकिन फिर भी कभी कभी वो अच्छा भी हो जाता था, अच्छा व्यवहार भी करने लगता था बहुत. तो इसको हम परम भगवान मानते हैं. Yeah, for example, when he went to ask Duryodhana to release Samba, he actually very humbly begged Duryodhana, please release Samba. तो इसलिए जब वो जाते हैं, जब एक सांब को जिन्होंने गिरफ्तार किया था दुर्योधन के रखे बोलते प्यार से कि है ना आप बहुत नम्रता से कि आप सांब को छोड़ दो. And when Duryodhana refused, Balaram told him, then I'm going to drag Hastinapur into Yamuna river. जब दुर्योधन ने मना कर दिया तो बलराम जी बोला मैं पूरा जो हस्तिनापुर को यमुना नदी के अंदर डाल देगा. So then Lord Balaram, he actually departed from this world by merging into Ananta Shesh and returning back to the Aprakat Lila of the Lord. इसके बाद फिर बलराम जी जो है ना भगवान के अप्रकट लीला में वो चले गए कृष्ण की. So we can see how Balaram's behavior was always about supporting Dharma, what is right, and especially when it came to very important decisions, he always took the side of Krishna. इससे आप देख सकते हैं हमें कैसे जो अपने धर्म की रक्षा के लिए और धर्म करने का साथ देते थे, और जब भी कृष्ण का कुछ होता था तो कृष्ण को ही साथ देते थे. Yeah, that's how a guru should behave. Guru always takes the side of Krishna. इससे जो गुरु का ऐसा ही होना चाहिए व्यवहार, हमेशा कृष्ण के का ही साथ देना चाहिए. Because Krishna is the all merciful Lord, the most compassionate personality, and therefore Krishna, although sometimes maybe taking a hard stand, it is his loving compassion. इसलिए कभी कभी जो कुछ ऐसा कुछ बहुत सख्ती से पेश आना पड़ता था, तो फिर भी लेकिन वो उन्होंने उसका बहुत धर्म के हमेशा के लिए हमेशा उन्होंने जो भी कुछ प्रदान हमसे धर्म की स्थापना होती है और धर्म के रास्ते पर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी कुछ करना था Hare Krishna. कृष्ण के साथ करता रहा. Thank you, dear devotees. I hope that this was sufficient. That's what I prepared and shared with you. If someone has a question or comment, I'll be glad to respond. तो कुछ अगर कुछ प्रश्न है कुछ है तो आप पूछ सकते हैं. Hare Krishna. I don't see anybody raising their hands, and so yeah, I don't see anybody raising their hands. Yeah.